I need it. Thank you. What a great night. And shukriya. Shukriya. Thank you. That was wonderful. I love this. वो बहुत बेहतरीन था. Congratulations to those entertainers. That was fabulous. My thanks to Sushil and Rashmi. मेरा शुक्रिया था सुशील और रश्मि के को. My thanks to Amit and Arti. मेरा शुक्रिया अमित और आरती को. And Prashant and Janki. और प्रशांत और जानकी को. And a special thanks to Jim and Nancy Dornan. और एक बहुत ज्यादा शुक्रिया जिम और नैन्सी डॉनन को. Who a few years ago, कुछ साल पहले, not too many years ago, बहुत साल पहले नहीं, started with a handful of people कुछ लोगों के साथ उन्होंने काम शुरू किया. and have created the largest network of its kind in the world. और अपने तरीके का एक अनोखा नेटवर्क दुनिया में बढ़ाया है. With tens of thousands of people all over the हजारों world. लोग हैं इस पूरे विश्व में उनके ग्रुप में. Stay close to your diamonds. अपने डायमंड के साथ रहिए. Stay close to Jim and Nancy. जिम और नैन्सी के करीब रहिए. Now March 1st, 1 मार्च को, that's the big day. बहुत बड़ा दिन है. Everybody's got their advice about March 1st. 1 तारीख के बारे में आप जानते हैं. Who should open? क्या खुलना चाहिए? Do we go right-handed, left-handed? राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड? Do we go with those who have experience, who've been in the World Cup before? क्या हम उनके साथ जाते हैं जिनके पास अनुभव है उस वर्ल्ड कप में? You know the movie Lagon? आपने लगान पिक्चर देखी है? You remember that line? आप वो लाइन जानते हैं उस फिल्म में से? Buon says to his team, बुआन अपनी टीम से कहता है, we're doing this so we will be free. हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे अपनी आजादी मिलेगी. So you know how to win this thing, you know how to win the World Cup. आप जानते हैं इसमें कैसे जीता जाता है. आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप कैसे जीत सकते हैं. Just tell them, all the players, tell them they won't have to pay taxes the rest of their life if they win. सारे खिलाड़ियों को बोल दे कि जिंदगी भर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा. They'll win. और वो जीत जाएंगे. Thank you very much for having me back in India. शुक्रिया मुझे यहां पर बुलाने के. It's been 20 years since I've been here. 20 साल हो चुके जब मैं पहली बार आया था. And I came many times to your great country. और मैं आपके इस महान देश में बहुत बार आया हूं. But it has changed. लेकिन उसमें बहुत बदलाव हुआ है. So many problems have been solved. इतनी बहुत सारी मुश्किलें हल हो चुकी हैं. I hear young people come to me and they talk about the challenges and their dreams for India. बहुत जवान लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं अपनी मुश्किलें को, अपनी जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं और वो क्या करना चाहते हैं. But I ask you to talk to your parents. लेकिन मैं कहता हूं कि अपने माता पिता से बात करिए. And let them tell you how much India has changed in the last 20 years. और आपके माँ बाप आपको बताएंगे हिंदुस्तान में कितना फर्क आया पिछले 20 साल में. How much new prosperity and new jobs that have come. लोगों ने कितनी उन्नति की है और कितनी नौकरियां मिली हैं लोगों को. How many new opportunities there are today that did not exist 20 years ago. कितने नए मौके और अपॉर्चुनिटी मिली है जो पहले नहीं थी. India has changed in 20 years. हिंदुस्तान बदला है पिछले 20 सालों में. And much of the change has been good. और जितना भी बदलाव हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है. I'll tell you what my problem was with this business and network building. मैं आपको बताता हूं इस बिजनेस के साथ, इस व्यवसाय के साथ मेरे क्या मुश्किल थी. I had a philosophical problem. मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल था. Is this what I want to do with my life? क्या यही है वो जो मैं करना चाहता हूं अपनी जिंदगी के साथ. I want my life to consist of something more than what I own or possess. जिंदगी खाली उस चीज की नहीं है कि आप चीजों को खरीदे, मैं उसमें कुछ और ढूंढना चाहता था. When I was in college, I had a professor. जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था मेरे एक प्रोफेसर थे. He taught that life was one big piece of pie or उन्होंने cake. कहा जिंदगी एक बड़ा पीस होता है, केक की तरह होता है. If you took a big piece for yourself, you were denying others. उस केक का अगर बड़ा हिस्सा आपने खा लिया तो दूसरे भूखे रह जाएंगे. You were being selfish. आप मतलबी बन रहे हैं. Take a small piece so everybody can have some. उस केक का थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए ताकि सब थोड़ा थोड़ा खा सकें.
He taught that people who are successful step on other people to get to the top. उन्होंने कहा कि जो लोग कामयाब होते हैं वे दूसरे लोगों को कुचल कर आगे बढ़ते हैं. He said in life there are people who will take and in life there are people who will give. उन्होंने कहा ऐसे लोग होते हैं कुछ जो लोगों से ले लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा दे देते हैं. But when I got out of college, लेकिन जब मैं कॉलेज से बाहर आया and when I got out into the world, और जब मैं इस दुनिया में आया, it was much more different than that. लेकिन हकीकत की दुनिया उससे अलग थी. I met artists and musicians मैं ऐसे कलाकारों से मिला who were very successful, जो बहुत कामयाब थे, and they did not step on other people to get to the top. लेकिन ऊपर जाने के लिए उन्होंने कभी किसी को कुचला नहीं था. They were not taking, they were giving. वो ले नहीं रहे थे, वो दे रहे थे. Sounds and rhythm and melodies that we would never hear without them. म्यूजिक और आवाज दे रहे थे कि उनके बगैर हम उसे कभी नहीं पाते. I met artists that were giving color and texture and dreams we would never see without them. मैंने ऐसे आर्टिस्ट को देखा जो रंग फैला रहे थे अपने, उनके बगैर हमें नजारा कभी नहीं देख सकते थे. And I began to meet business people who were givers, not takers. और फिर मैंने बिजनेस लोगों को मिला जो दे रहे थे, ले नहीं रहे थे. I began to understand the marketplace. मैं समझने लगा कि मार्केट में होता क्या है. I realized that when I buy a TV, I'm not depriving someone else of a TV. मैंने ये देखा कि मैं अगर टीवी खरीदता हूं अपने लिए, मैं किसी और का हक तो नहीं छीन रहा टीवी खरीदने के लिए. That if enough people buy television, बल्कि अगर बहुत सारे लोग टेलीविजन खरीद लें, the price will drop lower and lower and lower. उसकी कीमत तो कम होते जाती है और कम होते जाती है. And everybody can और have हर a एक- television. और फिर हर एक जन टीवी खरीद सकता है. When I was in college, जब मैं कॉलेज में था, I went through the cafeteria line at school. मैं कैंटीन में जाता लाइन में. Now my father paid for my college, मेरे पिताजी ने मुझे कॉलेज जाने के लिए पैसे भरे थे, and that included the food. और उसमें जो खाने का खर्चा होता है वो भी भरा था. But several of us got together and we went through the cafeteria line, लेकिन हम सब साथ में आए और हम उस कैंटीन की लाइन में खड़े होते, and we put a plate on our tray, अपनी एक ट्रे उठाते, प्लेट लेते, and we took no food. और हम खाना नहीं लेते, And we went to our table and we sat down in front of our empty plates. और हम अपने टेबल पर जाते और उन खाली प्लेटों के सामने बैठ जाते. And we said to the rest of the students, how can you eat? और हमने बाकी के विद्यार्थियों से कहा कि आप खाना कैसे खा सकते हैं? Half the world is hungry. आधी दुनिया तो भूखी है. If everyone would go without one meal a day, लेकिन अगर हम सब दिन का एक खाना छोड़ दें, the whole world would have enough food. पूरी दुनिया खाना खा सकेगी. That's what I believed. मेरा विश्वास वही था. I thought if I didn't eat, मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं खाऊंगा, other people could eat. दूसरे लोग खा सकेंगे. That's what my professor taught. वही मेरे प्रोफेसर ने कहा था Life is a big cake. कि एक लाइफ एक बड़े केक के टुकड़े के जैसे है. If you take too much for yourself, the others won't have any. अगर आप अपने लिए बहुत ज्यादा ले लोगे तो दूसरे भूखे रह जाएंगे. But I learned something. लेकिन मैंने कुछ सीखा. I learned that I was wrong. मैंने सीखा कि मैं गलत था. I learned this. मैंने ये सीखा, Empty plates don't feed hungry people. खाली प्लेटों से लोगों के पेट नहीं भरते. It takes work to feed hungry people. भूखों के पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है. Somebody has to plant. किसी को बीज बोने पड़ते हैं. Somebody has to sweat. किसी को पसीना बहाना पड़ता है. Somebody has to dig ditches and get water to those plants. किसी को खड्डे खोदने पड़ते हैं और पानी देना पड़ता है उन पौधों को. Sometimes they have to build dam and keep the water away from those plants. उन्हें कभी कभी बांध बांधने पड़ते हैं पानी को बचा के रखने के लिए. Somebody has to reap and harvest. किसी को बोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा. Empty plates will not feed the hungry. खाली प्लेट से भूखों का पेट नहीं भर सकता. Slogans will not feed the hungry. आपके अच्छे अच्छे शब्दों से लोगों का पेट नहीं भर सकता. It isn't enough for you to go without food to feed the hungry. सिर्फ ये नहीं है कि खाना छोड़ दे दूसरे का पेट भरने के लिए. You have to work to feed the hungry. आपको काम करना पड़ेगा भूखों का पेट भरने के लिए. Somebody has to do something. किसी को काम करना पड़ेगा. Somebody has to plant, somebody has to harvest. किसी को बोना पड़ेगा, किसी को रीप करना पड़ेगा. I learned the power of productivity. मैंने प्रोडक्टिविटी की ताकत सीखी. I learned the importance of doing something with my life. मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ करूंगा. You say, well, I will do something in the next life. आपने कहा नहीं, मैं तो अगली जिंदगी में कुछ करूंगा. I will accept my fate in this life. इस जिंदगी में तो जो मेरी किस्मत में है वही ठीक है. But how do you know what you are supposed to do in this life? लेकिन आपको कैसे पता कि इस जिंदगी में आपने क्या करना है? Unless you try, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, unless you dream, जब तक आप सपने नहीं लेंगे, unless you work, जब तक आप काम नहीं करेंगे, unless you are productive, जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, who knows what your assignment किसी is? को क्या मालूम आप इस जिंदगी में क्या करने आए हैं? Why you are here? आप यहां पर क्यों हैं? You know, I used to
deeply resent the terms winners and losers. आप जानते हैं इन दो शब्द से मैं दूर भागता था, विनर और लूजर से, जीतना और हारना। When I first got in this business and I would hear them talk about winners and losers, जब मैं इस व्यवसाय में आया और मैंने देखा वो बात करते, जीते हुए लोगों की और हारने की बात करते, I used to cringe. मैं तो डर जाता था। I thought, how dare they say someone is a winner or a loser? इनकी हिम्मत कैसे हुई किसी को कहने के लिए कि ये जीते हुए हैं और ये हारे हुए हैं? How do they know that? उनको कैसे पता? Is someone a loser because they're poor? ये हारे हुए क्योंकि ये गरीब है? How do they know what that person is going through? उन्हें क्या पता कि उस आदमी की जिंदगी में क्या हो रहा है? And I still have those feelings. और आज भी वो फीलिंग्स है मुझ में। I don't think it's our position to judge other people. मैं सोचता हूं हम कोई नहीं होते दूसरे लोगों को जज करने के लिए। Success is very hard to define. कामयाबी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। But I'll tell you this. लेकिन मैं एक और चीज कहूंगा। I have come to appreciate this idea of winners and losers. लेकिन अब ये आइडिया थोड़ा अच्छा लगता है हारे हुए लोगों का और जीते हुए लोगों का। Tonight when I fly out of Mumbai and head for Frankfurt, Germany, आज जब मैं मुंबई से बाहर निकलूंगा और यहां से हवाई जहाज में बैठकर फ्रैंकफर्ट जर्मनी जाऊंगा, I want the pilot of my jet plane to be a winner. जो मेरे प्लेन का पायलट है मैं चाहता हूं कि वो एक विनर है। I want a professional. मैं एक प्रोफेशनल पायलट चाहता हूं। When I hire a lawyer, I want a winner. जब मैं एक वकील को लेता हूं तो मैं चाहता हूं कि वो एक जीता हुआ वकील हो। I don't want a lawyer who has a philosophical attitude. ऐसा वकील मुझे नहीं चाहिए जो फिलोसॉफिकल है। I don't want a lawyer who says, well, maybe we'll win, maybe we'll lose, we don't know. मैं ऐसा वकील नहीं चाहता जो कहे हो सकता है हम हार जाएं, हो सकता है मुकदमा जीत जाए। My advice to you is just be prepared for prison, be prepared for the worst. हो सकता है आप जेल जा सकते हैं, तैयारी रखिए उसकी भी। And then if you win, well, that will be wonderful. और अगर आप जीत गए वो तो बहुत अच्छा होगा। Just enjoy the process. इंजॉय करिए ये जो आप जिसके थ्रू जा रहे The हैं। law is so fascinating. लॉ तो बहुत अच्छा है। Sometimes I think I'm going to win, कभी ऐसा लगता है कि हम जीत रहे हैं and I lose. लेकिन हम हार जाते हैं। Sometimes I think I'm going to lose, कभी ऐसा लगता है कि हम हार रहे हैं and I win. और हम जीत जाते हैं। My advice to you is just smell the flowers along the way. मेरी सलाह ये है कि ये फूलों की अच्छी सुगंध को लें। You hire your lawyer to smell flowers. आप अपने वकील को ले फूलों की सुगंध लेने के लिए। I hire my lawyer to win. मैं अपने वकील को लेता हूं जीतने के लिए। If my daughter needs a surgeon or a doctor, अगर मेरी बेटी के ऊपर ऑपरेशन करना है और किसी डॉक्टर की जरूरत है, they lay her down on an operating table, और ऑपरेटिंग रूम में उन्हें वो रखते हैं, and he takes out a knife, और वो डॉक्टर एक छुरी लेता है, and he's going to operate on my daughter. और वो मेरी बेटी के ऊपर सर्जरी करने वाला है। I want a surgeon who's a winner, मैं चाहता हूं कि वो सर्जन एक जीता हुआ सर्जन हो, not a loser. एक हारा हुआ नहीं। I want a professional. मैं एक प्रोफेशनल सर्जन चाहता I हूं। want a doctor who has an ego. एक ऐसा डॉक्टर चाहता हूं जिसमें बहुत ईगो है। I want a doctor who wants to be on the cover of India Today. मैं एक ऐसा डॉक्टर चाहता हूं जो इंडिया टुडे के कवर पेज पर होना चाहता है। I want a doctor who won't sleep for a month if he makes a mistake on my daughter. मैं ऐसा डॉक्टर चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी गलती के लिए वो एक महीने सोई नहीं, अगर कुछ गलत हो गया मेरी बेटी को तो। Now you expect your politicians to be winners? क्या नहीं चाहते आपके पॉलिटिशियन, आपके राजनीतिक नेता You भी expect जीते हुए your हों? school teachers to be winners? आप अपने स्कूल के टीचर को चाहते कि वो जीते हुए हों? You expect your airline pilots to be winners? आप चाहते हैं कि आपके एयरलाइन पायलट भी जीते हुए हों? You expect your doctors and lawyers to be winners? आपके वकील और डॉक्टर भी विनर्स हों? You expect your cricket team to be a winner? आप चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट टीम भी जीते? You should be a winner. आपको भी जीतना पड़ेगा। There is nothing wrong with you being a winner. आपको जीतने में कोई नहीं रोक सकता। At whatever you do, और आप कुछ भी करें, to do your best. लेकिन अपना सबसे अच्छा करें। You know, I have to tell you, लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा, I was influenced by my professor, मैं बहुत प्रभावित हुआ था उनसे, but I came to this conclusion. लेकिन मैंने ये निर्णय पे लिया, Life is not just a cake or a pie. जिंदगी सिर्फ एक केक नहीं है, Life is a kitchen, लाइफ तो एक किचन है, रसोई घर, and you can make another pie, और आप एक और केक बना सकते and हैं, another pie, और एक और केक बना सकते हैं, and another और एक pie. और केक बना सकते हैं, And another और pie. एक और केक बना सकते हैं। Everybody can have a motorcycle. हर एक जन एक मोटरसाइकिल खरीद सकता Everybody है। can have a bicycle. हर एक जन के पास एक साइकिल हो सकती है। Everybody can have a television. हर एक जन एक टीवी खरीद सकता है। My opinion has changed. मेरी राय बदल चुकी है। We celebrate free enterprise. हम यहाँ पर फ्री एंटरप्राइज सेलिब्रेट कर रहे हैं। It is very rare. ये बहुत अनोखा है। Before you can have free enterprise,
लेकिन फ्री एंटरप्राइज के आने से पहले you have to have two things. आपके पास दो चीजें होनी चाहिए. You must have political liberty आपके पास पॉलिटिकल आजादी होनी चाहिए and you must have economic opportunity. और आपके पास एक आर्थिक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए. Both things have to happen at the same time. दोनों चीजों को साथ में होना पड़ेगा. There are nations in the world that have economic opportunity, but they have no political liberty. बहुत सारे देश हैं जिनके पास आर्थिक आजादी है लेकिन पॉलिटिकली वो आजाद नहीं है. People will work very hard लोग बहुत मेहनत करते हैं and become very successful because they have economic opportunity. बहुत कामयाब हैं क्योंकि उनके पास एक आर्थिक अपॉर्चुनिटी है. And the government will take it away लेकिन गवर्नमेंट उनसे खींच लेती है because they have no political liberty. क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल आजादी नहीं है. And there are nations of the world that have political liberty, और ऐसे देश है जिनके पास पॉलिटिकल आजादी है but they have no economic opportunity. लेकिन उनके पास कोई इकोनॉमिक मौका नहीं है उनके पास. That has been the story of India until the last 15 years. पिछले 50 साल तक ये इंडिया के पास हुआ है कि उन्हें कभी कोई मौका नहीं दिया गया. Look at the world. दुनिया को देखिए. China is the largest nation on earth. चाइना इस विश्व का सबसे बड़ा देश है. 1.2 billion people. 120 करोड़ लोग हैं वहां पर. In all of its history, पूरे इतिहास में उसके the largest nation on earth, जो सबसे बड़ा देश है इस विश्व का, in thousands of years of history, हजारों साल में they have never once उन्होंने कभी भी experienced a moment like you're experiencing tonight. ऐसा क्षण उनकी जिंदगी में कभी भी नहीं आया जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं. Take a deep breath. एक लंबी सांस भरिए. This is India today. ये हिंदुस्तान है आज का. You have political liberty आपके पास राजनीतिक आजादी है and you have economic opportunity. और आपके पास एक आर्थिक मौका है आपके पास. And both are happening at the same time. और दोनों आज साथ में मिल रहे हैं. This is rare. ये बहुत अनोखा है. This is not normal. ये साधारण नहीं है. In the whole history of the Chinese people, चाइना के पूरे इतिहास में the great dynasties that ruled for hundreds and thousands of years, जो बड़े बड़े डायनेस्टी ने वहां पर हुकूमत की, they have never had a moment उनके जिंदगी में ऐसा क्षण कभी नहीं आया like you have tonight. जो आज आपके पास यहां पर है. India हिंदुस्तान is the second largest nation in the world. हिंदुस्तान इस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है. 1 billion people. 100 करोड़ लोग हैं यहां पर. Most of you tonight in this stadium will live to see India become the largest nation in the world. आप सब जिंदा रहेंगे जब हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा. Most of you in your lifetime. सब नहीं लेकिन बहुत से लोग आपकी जिंदगी में आप देखेंगे वो दिन. It will pass China. वो चाइना से आगे निकल जाएगा. India has a very rich and a very wonderful history. इंडिया का इतिहास बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा है. There was the great empire of Ashoka. अशोका द ग्रेट एम्पायर थे पहले. And he fought many wars. और उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी. And they were terrible wars. और बहुत बड़ी लड़ाइयां थी. And so many people died और बहुत से लोग मर गए. that he regretted his life as a warrior. और उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ उसके बाद. He became a Buddhist. और वो बुद्धिस्ट बन गए. He gave up war. उन्होंने लड़ाई छोड़ दी. There is the great Industan empire of the 16th century. Industan. इंडस्टैन एम्पायर था 16वीं सदी का. There was Akbar. Vicky. अकबर थे यहाँ पर. He was the Mongol who dominated most of Asia. पूरे एशिया में उसने काफी हुकूमत की. This was a great period in Indian history. वो एक बहुत ऐतिहासिक क्षण था हिंदुस्तान की हिस्ट्री में. For 200 years the British ruled India. 200 साल के लिए ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान पे हुकूमत जमाई. Until a little humble man with no army और फिर एक छोटे से इंसान ने बिना किसी सेना के broke the back of the British Empire and led his people to freedom. और ब्रिटिश एम्पायर की कमर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी. In all the thousands of years of Indian history, उन हजारों साल के इतिहास में हिंदुस्तान के there has never been a moment like tonight. लेकिन आज जैसा क्षण पहले कभी नहीं हुआ. There has never been a generation like your generation. आपकी जैसी पीढ़ी पहले कभी भी नहीं थी. For 55 years you've had political liberty. 55 साल हुए आपको आजादी मिले. The second largest nation in the world. दुनिया का सबसे बड़ा नेशन दूसरे नंबर पर. 1 billion people. 100 करोड़ लोग. And in thousands and thousands of years of history, only in the last 55 years you've had political liberty. और हजारों साल का इतिहास और 55 साल में आपको इकोनॉमिक पॉलिटिकल आजादी मिली है. And of those 55 years, और उस 55 साल से only in just about the last decade और पिछले सिर्फ 10 साल में
have you had economic opportunity like you have today? आपको एक इकोनॉमिक मौका मिला गया है आज की तरह. This is a rare moment for India. ये एक बहुत अनोखा क्षण है हिंदुस्तान के लिए. We could talk about the dictatorships in Africa. हम अफ्रीका की डिक्टेटरशिप के बारे में बात कर सकते हैं. We could talk about the United States that had slavery for 150 years. हम अमेरिका के बारे में बात कर सकते हैं जहां पर 150 साल के लिए स्लेवरी थी. We could talk about Japan. The Prime Minister of Japan recently apologized to the women of his country. हम जापान के बारे में बात करते हैं. वहां के प्रधानमंत्री ने अपने औरतों से माफी मांगी. Because thousands of women were born into prostitution without a choice in that country for years. क्योंकि बहुत से लोग वहां पर उस ऐसे एरिया में पैदा हुए थे जहां उनके पास कोई चॉइस नहीं था. We could talk about the dictatorships of South America. हम साउथ अमेरिका की डिक्टेटरशिप के बारे में बात कर सकते हैं. Brazil is now experimenting with its 5th try at democracy. ब्राजील 5वीं बार कोशिश कर रहा है आजादी पाने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए. We could talk about Indonesia, the 4th largest nation in the world. इंडोनेशिया जो इस विश्व का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, It is experiencing political liberty just about as long as you have, that's all. वो भी पॉलिटिकल आजादी पाने की कोशिश कर रहा है जैसे आप हैं. In its thousands of years of history, उनके हजारों साल के इतिहास में this world, ये दुनिया, this earth, ये विश्व has had very, very little moments of free enterprise. बहुत ही छोटे छोटे क्षण हुए हैं फ्री एंटरप्राइज के. Of all the millions and millions of Indians who have lived and died, लाखों हिंदुस्तानी जो जिए हैं और गुजरे हैं, only now in the last decade बस सिर्फ अभी पिछले 10 साल में has political liberty and economic opportunity arrived at the same time. in पॉलिटिकल India. लिबर्टी और एक इकोनॉमिक मौका आपको साथ में मिला जा रहा है. This is an unusual moment. ये एक बहुत ही अनोखा क्षण है आपके लिए. Free enterprise is like a candle. फ्री एंटरप्राइज एक कैंडल की तरह है, मोमबत्ती की तरह. One candle in a dark world. एक अकेली मोमबत्ती एक अंधेरे कमरे में. And if we know anything about history, और अगर हम इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं, if we know anything about human nature, लेकिन अगर हम इंसानों के बारे में कुछ जानते हैं, we know that someday, उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं, तो एक दिन somehow, कभी ना कभी कैसे someone कहीं ना कहीं कोई will blow that candle out. उस कैंडल को फूंक मार के बुझा देगा. This will not last. ये नहीं चलेगा. Liberty will not last in the United States. आजादी यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रह सकेगी. We all love to go back into history and to see our ancestors हम इतिहास में जाना चाहेंगे और अपने पुरखों को देखना चाहेंगे. and what they did and where they came from. उन्होंने क्या किया, वो कहां से आए. The tyranny of the future will be a terrible thing और आगे भविष्य में देखना बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है, because of its technological wonder. क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलते रहती है. They'll really be able to control people in the future. भविष्य में तो वो लोगों को कंट्रोल कर सकेंगे. Someday, एक दिन your descendants will come looking for you. आपकी आने वाली पुरखे आपको ढूंढेंगी. The way you like to research and find out who your great-great-grandparents were. जैसे आप देखना चाहते हैं कि आपके पुश्ते कहां से आ रही हैं. Your descendants, आपकी आने वाली पीढ़ी with some special technology, किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ will come looking for you. वापस आएंगी आपको ढूंढने के लिए. And they'll be excited. और वो बहुत उत्साहित होंगे. Their heart will be beating as they get close to your name. उनका दिल धड़केगा जोर जोर जब वो आपके नाम के करीब आएंगे. Because you were free. क्योंकि आप आजाद थे. Because you lived in India at the turn of the millennium. क्योंकि आप हिंदुस्तान में उस समय रहे जबकि सब कुछ बदल रहा था. At that rare moment in history. उस अनोखे क्षण में इतिहास के, When there was political liberty. जहां पर आपको पॉलिटिकल लिबर्टी When मिली, there was economic opportunity. जहां पर आपको इकोनॉमिक मौका मिला, When you had freedom to travel. जहां पर आपको आजादी थी घूमने के When लिए, you had freedom to speak. आपके पास आजादी थी कुछ बोलने के लिए, When you had freedom to start your own business. आपके पास आजादी थी अपना व्यवसाय शुरू करने के And लिए. when they find you, और जब वो आपको ढूंढ लेंगे, what will they find? वो क्या ढूंढेंगे, क्या पाएंगे वो? You who have the freedom to speak, वो जिनके पास आजादी है बोलने के लिए, what will they find that you said? वो क्या ढूंढेंगे आपने क्या बोला? You who had the freedom to travel, आप जिनके पास आजादी थी घूमने के लिए, सब करने के लिए, where did you go? आप कहां गए? You who had the freedom to start your own business, आप जिनके पास एक मौका था अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, what did you do with your life? आपने क्या किया अपनी जिंदगी के साथ? You who were given the power to make men's dreams come true, आप जिनको वो शक्ति दी गई थी कि आप दूसरे लोगों के सपने को पूरे कर सकते हैं, what will they find? वो क्या ढूंढेंगे आप में? When I got out of school, जब मैं स्कूल से बाहर आया,
They said, this is the real world. उन्होंने कहा ये असली दुनिया है. When I was in school, the teacher would say, you can't get away with that in the real world. जब मैं स्कूल में था मेरी टीचर कहती असली दुनिया में आप इससे नहीं बच सकते. Sometimes the coach would say that. और कभी कभी हमारा कोच जो हमें सिखा रहा था वो भी ये कहता, I'm going to let this go. मैं इसे छोड़ दूंगा. But you won't get away with that in the real world. मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन दुनिया आपको असली दुनिया नहीं छोड़ेगी. They kept talking about the real world. वो असली दुनिया के बारे में बात करते रहते. This is it. लेकिन ये है असली दुनिया. We're out of school. हम स्कूल से बाहर आ चुके हैं. I don't know if you've been told that lately. मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं. You're out. आप स्कूल से बाहर आ चुके हैं. This is life. ये जिंदगी है. This is the real world. ये एक असली दुनिया है. What are you waiting for? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? You know how to work. आप जानते हैं काम कैसे करते हैं. Sometimes you've worked very hard. कभी आप बहुत मन लगा के काम करते हैं. So what are you saving your work for? तो आप अपने काम को किस चीज के लिए बचा रहे हैं? You know how to be charming. You know how to be charming. आपको मालूम है अच्छा कैसे दिखते हैं. You were charming when you got your wife. आप बहुत खुश थे जब आपको अपनी पत्नी मिली. So what are you saving your charm for? आप अपनी खुशी किस चीज के लिए बचा रहे हैं? You know how to be enthusiastic. आपको मालूम है उत्साहित कैसे होते हैं? If you wanted to be, you could be enthusiastic. अगर आपको होना है तो आप उत्साहित हो सकते हैं. What are you saving it for? आप किस चीज के लिए बचा रहे हैं? It's like we're taking our charm and we're putting them in bottles. ऐसे हम अपनी मुस्कुराहट को लेके छोटी छोटी बोतलों में बंद कर रहे हैं. Like fine wine. एक बहुत अच्छी वाइन की तरह. And now we put a cork in the bottle. और फिर हम उसे टाइट बंद कर देते हैं. And now we're going to hide our charm. There's a bottle. और अपनी मुस्कुराहट को अपने अच्छेपन को हम Oh, छुपा here's some देंगे. enthusiasm. यहाँ There's a bottle. थोड़ा उत्साह इसे बोतल में डाल के Here's छुपा some दिया. more charm. थोड़ी और खुशी There's a हमारी bottle. मुस्कुराहट उसे छुपा दी. When will you work? अब काम कब करेंगे? In the next life? अगली जिंदगी में. When are you planning to be charming? आप खुश कब होंगे? When are you planning to be enthusiastic? अब कब प्लानिंग करेंगे उत्साहित होने की? This is it. यही है क्षण. Get out those bottles. उन बोतलों को खोलिए. Break them open. उन्हें तोड़ दीजिए. Pour out the charm. अपनी अच्छी पर्सनालिटी को बाहर निकालिए. Pour out the work. अपने काम को बाहर निकालिए. Pour out the enthusiasm. अपने उत्साहपन को बाहर निकालिए. Use the gifts that God has given you. भगवान ने जो तोहफे दिए हैं आपको उनका इस्तेमाल करिए. You know, India is a great country. आप जानते हैं हिंदुस्तान एक बहुत महान देश है. But the president of your country was right. लेकिन आपके राष्ट्रपति सही थे. India's strength is its diversity. इंडिया की ताकत है कि वो बहुत फैला हुआ है और अलग है. Your national anthem talks about the song from the heart. आपकी नेशनल एंथम जो कहती है कि ये गाना है मन का, लोगों का. There is such diversity. बहुत सी अलग अलग चीजें हैं हिंदुस्तान में. So many languages. बहुत सारी भाषाएं हैं यहाँ पर. So many religions and cultures. बहुत सारे धार्मिक लोग हैं यहाँ पर अलग अलग. And fighting to live together in peace and working to live together in peace. बहुत सारे धर्म हैं और सब मिलकर एक साथ इकट्ठा रह सकते हैं. India has taught the world. इंडिया ने दुनिया को सिखाया है. It is a lesson to people everywhere. ये एक शिक्षा है पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए जो हिंदुस्तान ने सिखाया है. But its strength has also been its weakness. लेकिन उसकी ताकत कभी कभी कमजोरी भी बनी है. Because at times it has been divided. लेकिन कुछ वक्त हुए जब वहां पर कुछ टूटा है इस देश में. The nation's success is its dream. लेकिन नेशन की ताकत है उसका सपना. If it can find a common dream, as your president has said. जैसे हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हम सब एक सपना ले सकते हैं एक साथ मिलकर. And that is the secret to your success as an individual. लेकिन वो एक रहस्य है आपकी कामयाबी का. To find your dream. कि आप अपना सपना ढूंढें. To break open the bottles. उन बोतलों को तोड़ दें. To do something with your life. कुछ ऐसा करें अपनी जिंदगी के साथ. God did not create you to watch television. भगवान ने आपको नहीं बनाया इसलिए कि आप टीवी देखें. That is not why you are here. इसलिए आप यहां पर नहीं आए हैं. God created you to be on television. भगवान ने आपको बनाया ताकि आप टेलीविजन पर आ सकें. To do something with your life. कुछ कर दिखाने के लिए अपनी जिंदगी के साथ. You say, well, how do you know that I'm supposed to do something with my life? Maybe I'm supposed to be poor. आप कैसे कह सकते हैं मुझे अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना है? हो सकता है मैं गरीब होने के लिए बना हूं. Maybe I'm supposed to suffer. हो सकता है मेरी जिंदगी में किस्मत में लिखा है कि मुझे और तकलीफें उठानी पड़ेंगी. How do you know? आपको कैसे पता है? Maybe you are here to feed the hungry. हो सकता है आप यहां पर हैं भूखों का पेट भरने के लिए. How do you know until you try? आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे?
Maybe you are here to build the future for your children. हो सकता है आप यहां पर हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए. How do you know until you try? आपको कैसे पता चलेगा अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो? Well, my professor had a lot of influence on my life. मेरे प्रोफेसर का बहुत प्रभाव था मुझ पर. But reality intruded. लेकिन हकीकत नहीं. You know, I had the wonderful experience एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ working with Jim Dornan, जिम डॉन के साथ काम करते हुए. of traveling all over the world to so many different cultures. पूरे विश्व में सफर करता हूं, अलग अलग देश जाता हूं. I have learned so much मैंने इतना कुछ सीखा है. by just listening. मैंने सीखा है सुनकर. It's not fair because when you see me, I'm talking. ये सही नहीं है क्योंकि जब आप मुझे देख रहे हैं मैं तो बात कर रहा हूं. But most of the day, I'm listening लेकिन बाकी के घंटों में सुन रहा होता हूं and I'm learning. और मैं सीख रहा होता हूं. And this network Jim Dornan has built all over the world और ये नेटवर्क जो जिम डॉन ने पूरे विश्व में बनाया है has given me the opportunity to hear from so many diverse voices. मुझे एक मौका दिया गया है कि अलग अलग आवाजों को मैं सुनूं. I'll never forget my first trip to Budapest, Hungary. मैं अपना पहला सफर नहीं भूलूंगा हंगरी जब मैं गया था. I thought I would never, ever be able to visit Hungary because it was a communist country. मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं हंगरी जाऊंगा क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है. And I worked in the White House. और मैं व्हाइट हाउस में काम करता था. And they didn't want us going into communist countries. और वो ये भी नहीं चाहते थे कि हम कम्युनिस्ट कंट्री में जाएं. They were afraid the KGB would kidnap us. वो डरते थे कि वहां की केबीजी हमें पकड़ लेगी. But I don't know what secrets I could have told them, Vicky. लेकिन मैं जानता नहीं मैं उनसे क्या बोल सकता था. If they tortured me, I could have told them how to go diamond. अगर वो मुझे टॉर्चर करते तो मैं उन्हें बताता कि डायमंड कैसे जाते हैं. I'd say it's tapes. टेप्स. It's edification. Stay close to your diamonds and emeralds. एडिफिकेशन करिए, अपने डायमंड्स और एमरेल्ड्स के करीब रहिए. They'द say, that's not it. What is it really? वो कहते हैं वो हकीकत नहीं है, बताइए क्या है. Really? That's it. That's it. मैं कहता नहीं 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 Please, यही you gotta हकीकत believe है. मैं विश्वास करिए यही हकीकत है. But the Berlin Wall came down, लेकिन बर्लिन वॉल जब गिरी and I went to Budapest, Hungary to speak to a large crowd. और मैं बुदापेस्ट हंगरी में गया एक बहुत सारे लोगों से बात करने के लिए. I told them मैंने उनसे कहा that I was a little boy during the Hungarian Revolution. हंगरी में जब रेवोल्यूशन हो रहा था मैं एक छोटा सा लड़का था. It was in the middle of the Cold War. कोल्ड वॉर के बीच का समय है ये. For 1 week, एक हफ्ता Hungary erupted in a revolution. हंगरी में बहुत रेवोल्यूशन हुआ. Students and workers came up out of the sewers and threw Molotov cocktails off the rooftops. लोग आए और बहुत दंगा हुआ वहां पर. And the Soviet Union sent in their tanks. और सोवियत यूनियन ने अपनी टैंक्स भेजी वहां पर. But they couldn't crush it. अपनी फौज को भेजी लेकिन उसे रोक नहीं सके. The revolutionaries won जो रेवोल्यूशन कर रहे थे वो जीत गए. for 1 week. एक हफ्ते. And the Soviets pulled out their tanks. और सोवियत रशिया के लोग वहां से अपने टैंक निकाल लिए फौज के. They called in reinforcements from Poland and East Germany. पोलैंड और ईस्ट जर्मनी से उन्होंने और And newsmen rushed into Budapest from the west. और वेस्ट से बहुत सारे एडिटर्स आए पेपर के. And for 1 week, और एक हफ्ते के लिए Hungary was free. हंगरी आजाद हो गया. It was amazing. वो बहुत अच्छी बात है. When I went there, I heard more stories about it. जब मैं वहां गया तो मुझे और कहानी सुनी. They said the restaurants stayed open all night long. उन्हें कहा कि रात भर वहां पर तो होटल खुले रहते हैं. People served the food free of charge to anybody who came. लोग फ्री में खाना बांट रहे थे. For a week, people couldn't sleep. मुफ्त का खाना मिल रहा था. एक हफ्ता लोग सो नहीं सके. Hundreds of thousands of people walked along the Danube River holding torches. हजारों लाखों लोग उस नदी के पार चल रहे थे और मोमबत्ती उठाए हुए. They sang songs that the communists never allowed them to sing. उन्होंने वो गाने गाए जो कम्युनिस्ट ने उन्हें कभी अलाउ नहीं किया गाने के लिए. You couldn't drive a car because people were dancing in the streets. आप गाड़ी नहीं चला सकते थे क्योंकि लोग रास्ते में नाच रहे थे. I was a little boy. मैं एक छोटा सा लड़का था. And I was watching on television. और मैं वो टीवी पर देख I रहा was था. 10 years old. मैं 10 साल का था. And the pundits and the commentators were saying, this is terrible. और वहां पर कमेंटेटर्स कह रहे थे तो बहुत बुरी बात है. They want to be free. वो आजाद होना चाहते हैं. But it can't be. लेकिन वो हो नहीं सकता. Eisenhower is not going to risk a nuclear war to save this nation. वो न्यूक्लियर वॉर नहीं रोकेंगे इस नेशन को बचाने के लिए. Harold Macmillan is not going to risk a nuclear war to save Hungary. हैरोल्ड मैकमिलन न्यूक्लियर वॉर को नहीं बचाएंगे इस देश को बचाने के लिए. The Soviets will come back. रशियंस फिर आएंगे सोवियत. And they will crush this rebellion. और इस They will defeat this rebellion. उन्हें हरा देंगे इस रिबेल को. And there won't be freedom. और वहां पर आजादी नहीं होगी. It's going to happen. ये होगा.
This is terrible. ये बहुत गलत बात है। My parents turned off the radio. मेरे माँ बाप ने उस टीवी I को बंद turned it किया back on to hear it. और मैंने फिर शुरू किया। My parents would turn off the television because it was depressing. मेरे माँ बाप टीवी को बंद करते क्योंकि उससे दुख पहुंचता है। Nobody can help them. उन्हें उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। It was right in the middle of the Cold War. उस कोल्ड वॉर की बीच का समय है ये। Just 1 week of freedom. एक हफ्ते की आजादी, Just very brief. बहुत छोटी। Take a deep breath. एक लंबी सांस भरिए। You are free. आप आजाद हैं। Your ancestors were not free, but you are free. आपके पुरखे आजाद नहीं थे लेकिन Take आप a आजाद deep हैं। breath. एक लंबी सांस भरिए। You have economic opportunity. आपके पास एक आर्थिक मौका है यहाँ पर। Your fathers and grandfathers did not have this economic opportunity. आपके पिता आपके दादा के पास ये मौका नहीं था, But you have it tonight in लेकिन India. आज यहाँ पर हिंदुस्तान में आपके पास है। It's rare. ये बहुत अनोखा है। And then the Soviets came in and they crushed the और revolution. वो सोवियत आ गए और उस रेवोल्यूशन को उन्होंने तोड़ दिया। I was a little boy मैं एक छोटा सा लड़का था, listening on the radio. रेडियो पे मैं सुन रहा था। And there was a pirate radio station that the Soviets couldn't find. वहां पर एक पायरेट रेडियो स्टेशन था जो सोवियत ढूंढ नहीं सके थे, And they kept broadcasting to the world और वो दुनिया को बोलते गए वहां से, in English and in French and in German and many languages. अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में, बहुत सारे भाषाओं में। Peoples of the world, दुनिया के लोगों को listen to the alarm bells ringing in Hungary. वो उस अलार्म की घंटी को सुन रहे थे जो हंगरी में बज रही है। Help us. हमारी मदद करिए, SOS. जल्द से जल्द। Our ship is sinking. हमारी कश्ती डूबने वाली है, SOS. जल्द से जल्द Help us. हमारी मदद करिए। Send us soldiers. हमें कोई फौजी भेजिए। Listen to the alarm bells ringing from Hungary. हमारी घंटियों को सुनिए जो हंगरी में बज रही हैं। My parents would turn off the radio. मेरे माता पिता उस रेडियो को बंद करते। When they leave the room, I'd turn it on again. जब वो रूम से बाहर जाते तो फिर मैं उसे शुरू करता, Over and over. बार बार The same words. सेम शब्द। Peoples of the world, वही लोगों की बातें, इस विश्व के लोग। listen to the alarm bells ringing from Hungary. हमारी Help us. हमारी घंटियों को सुनो जो हंगरी में बज रहे हैं, हमारी मदद करिए SOS. जल्द से जल्द। Now, as I was giving this speech in Hungary, लेकिन ये स्पीच जब मैं हंगरी में दे रहा the था, people were very moved. लोग A lot of emotion. बहुत जज्बाती हो गए। Vicky, right in the middle of the speech, somebody shouted real loud. स्पीच के बीच में किसी ने जोर से चिल्लाया। I said to my translator, what was that? मैंने जो अनुवाद कर रहा था उससे कहा, ये क्या कहा इसने? He said, they just shouted the word freedom. उसने कहा कि उसने चिल्लाया आजादी। And then in the middle of my speech, they broke into singing, right in the middle of the speech. और जब मैं बात कर रहा था, बात करते करते उन्होंने गाना शुरू किया। That had never happened before. उससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। I said to my translator, what is going on? जो मेरा अनुवाद कर रहा था, मैंने कहा ये हो क्या रहा है? He said, they're just overcome by emotion. मेरे अनुवाद करने ने कहा कि ये बहुत जज्बाती हो गए हैं। They're singing their national anthem. वो हमारा नेशनल एंथम गा रहे हैं, राष्ट्रीय गीत। And as I was telling the story of the radio station, my translator began to cry, began to weep. और जब मैं उस रेडियो स्टेशन की अपनी कहानी बता रहा था तो मेरे अनुवाद करने वाले ने रोना शुरू किया। I thought, oh no, मैंने कहा नहीं, ये क्या? you're ruining my speech. आप तो मेरी स्पीच खराब कर देंगे। You're supposed to translate. आपको स्पीच को ट्रांसलेट करना है। You're supposed to do what I do. आपको वो करना है जो मैं कर रहा If हूँ। I cry, you cry. अगर मैं रोऊंगा तो आप I'm रोएंगे। not crying, so stop crying. मैं तो नहीं रो रहा, तो रोना बंद करिए। We don't cry, right? हम रोते नहीं हैं। But he was just crying. लेकिन वो तो रो रहा था। So I kind of bumped him like this. तो मैंने जाके उसे ऐसे धक्का दिया। Like, come on, चलो चलो शुरू I करो, need you. मुझे आपकी जरूरत है। Afterwards, we met backstage. उसके बाद हम स्टेज के पीछे मिले, मंच के पीछे। He said, I'm so sorry. तो उसने कहा मुझे माफ करिए, You didn't know. आप जानते नहीं, My mother worked in that radio station. मेरी माँ उस रेडियो स्टेशन में काम करती थी। We're the same age. हम हम उम्र हैं। I was 10 years old too. मैं भी 10 साल का था उस वक्त। And when we were up there और जब हम वहाँ ऊपर on थे, that stage, उस मंच पर, it hit me. मुझे Just कुछ thought. लगा, मुझे ख्याल आया My mother was at the radio station. कि मेरी माँ उस रेडियो स्टेशन में And थी। I was wondering whether she was going to come home alive that night. और मैं ये सोचता था कि क्या मेरी माँ वापस जिंदा आ सकेगी आज। And you were in the United States listening by a radio. और आप अमेरिका में बैठे रेडियो पर सुन रहे थे। And here we are, और आज यहाँ हम हैं, those two little 10-year-old boys वो 10 साल के दो छोटे लड़के on stage मंच पर in Hungary, हंगरी में free, आजाद building our business अपने together. बिजनेस को एक साथ मिलकर बढ़ा रहे हैं। The world had changed. दुनिया बदल चुकी थी। Now I have a question for you. और अब मेरे पास एक सवाल है आपके लिए।
So what? You're free. अगर आप आजाद हैं तो क्या? What difference does it make that you're free? क्या फर्क पड़ता है आप आजाद हैं? You say, well, we have the freedom to travel. हमारे पास तो आजादी है कहीं पर भी जाने के When लिए. I spoke in Poland for Jim Dornan, I was in the port city of Gdansk. जब मैं पोलैंड में बात कर रहा था पोर्ट सिटी में जिम डॉनन के लिए, I could look out the window and I could see the linen shipyards where Lech Wałęsa had made his stand. मैं खिड़की के बाहर देख सकता था. That was quick. Johnny Lieber. Oh, how do you say tapuri? Huh? Tapuri? Tapuri. No. So, and pardon me, I'm sorry. मुझे माफ करिए. I'd look out my hotel room. और मैं होटल के बाहर देखता I हूं. was right on the North Sea, मैं नॉर्थ सी के पास में था. and there were these young couples walking up and down the North Sea. और जो जवान जोड़े उस समुद्र के पास चल रहे थे, There was a crowd of them. बहुत सारे लोग थे. And I asked someone, I said, why are there so many young people gathered along the North Sea? It's very cold. और मैंने पूछा इतने सारे जवान जोड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो बहुत ठंड है. They said, well, they've never seen the North Sea. उन्होंने कहा उन्हें नॉर्थ सी तो कभी देखा ही नहीं. I said, well, where are they from? वो कहां से आए हैं? Well, they're from Poland. उन्हें कहा वो तो पोलैंड से हैं. I said, well, I mean, it's not very far to go to the North Sea from Poland, from the furthest distance in Poland. It's very quick. मैंने कहा नॉर्थ सी जाना कोई मुश्किल बात तो नहीं, पोलैंड के तो बहुत करीब है ये. They said, oh, some of these people live less than 2 hours from the North Sea, and they've never seen the North Sea. तो उसने कहा लोग तो यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी नॉर्थ सी नहीं देखा. I said, how is that possible? मैंने कहा ये कैसे हो सकता They है? said, oh, you don't understand. We didn't have the freedom to travel. उन्हें कहा पहले हमारे पास आजादी नहीं थी सफर करने के लिए. We had identification papers. हमारे पास एक आईडी कार्ड होता था. If we wanted to go to the next village, we had to appear before a committee and explain why we were going to the next village. अगर हम दूसरे गांव जाना चाहते थे हमको वो आई कार्ड दिखाना पड़ता था और पूछना पड़ता था और बताना पड़ता था कि हम वहां क्यों जाना चाहते हैं. And the committee would say, well, why do you have to go? और वो कमेटी कहती है आप क्यों जाना चाहते हैं? What is your business there? आपका व्यवसाय क्या है वहां पर? What is the purpose? आप किस कारण से जाना चाहते हैं? And many of these young couples had never seen the North Sea. और यहाँ से बहुत सारे जवान जोड़ों ने कभी नॉर्थ सी देखा ही नहीं था. Isn't it great to be free? क्या अच्छा नहीं है आप आजाद हैं? Free to travel. आजादी है ट्रैवल करने की. But what difference does it make लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा if you don't travel? अगर आप सफर ही नहीं करें तो? Freedom to speak. freedom? Freedom to speak. आजादी है बात करने की. What difference does it make क्या फर्क पड़ेगा उससे if you don't say anything? अगर आप कुछ बोले ही नहीं? Freedom to build your business. आपके पास आजादी है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए. What difference does it make क्या फर्क पड़ेगा if you spend your life watching television अगर आप अपनी पूरी जिंदगी टीवी देखने में बिता दें and you never build your business? और कभी अपना बिजनेस नहीं बिल्ड करें? Are you free क्या आप आजाद हैं or are other people free? कि दूसरे लोग आजाद हैं? Are you celebrating your freedom? क्या आप अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं Or are you celebrating the freedom of others? कि आप दूसरे लोगों की आजादी का जश्न मना रहे हैं? Let me tell you the story मुझे आपको बताने दीजिए एक कहानी. of a little boy of India. एक छोटा सा लड़का हिंदुस्तान का. He is out there tonight, आज वो बीच में है यहाँ पर. a little 13-year-old boy, एक 13 साल का लड़का, very poor. बहुत गरीब. When it rains, जब बारिश गिरती it rains harder inside his house than it does outside his house. उसके घर में ज्यादा बरसात गिरती उसके घर के बाहर से ज्यादा. His father pays 60 rupees a month उसके पिताजी 60 रुपए महीने का भरते for the little place where he and his brothers and sisters and mother and father live. उस छोटी सी जगह पर जहां पर माँ बाप भाई बहन मिलकर इकट्ठे छोटे से घर में रहते. But he's proud of his father लेकिन आज उन्हें बहुत गर्व है अपने पिता because पर, his father worked very hard क्योंकि उनके पिता ने बहुत मेहनत की and he was a very kind man. और वो एक बहुत अच्छे इंसान थे. And because of his kindness and his generosity of spirit और उनकी अच्छाई के लिए और क्योंकि वो इतना देना चाहते थे and his hard work, और उनकी मेहनत के लिए this combination और ये सब मिलकर built a great business एक बहुत बड़ा बिजनेस बना है उससे आज. and brought success to his family. और आज उनका परिवार कामयाब है. But his partners लेकिन उनके पार्टनर्स cheated him. ने उनको धोखा दिया. He was too kind. वो बहुत ही अच्छे थे. He was too innocent. वो बहुत इनोसेंट थे. He signed the wrong piece of paper. उन्होंने गलत कागजों पर इश्तिहार दे And all he साइन had कर दिया. built और उन्होंने एक ही चीज बिल्ड की थी
And all he had done, और जितना कुछ उन्होंने किया था and the lifetime he had given, और जो अपनी पूरी जिंदगी दी थी, was lost. एक हस्ताक्षर में सब खो गया. And now he was living in poverty. और अब वो बहुत गरीब थे. And tonight, और आज he comes home to his house, आज वो अपने घर पे आते हैं and he holds in his hands 1 pound of wheat. और वो अपने घर पे आते हैं ये आधा किलो आटा लेकर. And he says to his wife, और वो अपनी वाइफ से कहते हैं, पत्नी से, "This is it. यही है, This is all we have. यही है हमारे पास, There is nothing left." और कुछ नहीं बचा हमारे पास. And his 13-year-old son tonight is listening. और वो 13 साल का लड़का आज ये बात सुन रहा है यहाँ And पर. he is trembling with rage और अंदर उसके बहुत कुछ हो रहा है, and anger बहुत गुस्सा भी है. for all that his father has given और जो कुछ उसके पिताजी ने उसे दिया, and all the work that he has done. और जितना काम उसने किया. And that 13-year-old boy promised himself this. वो 13 साल के लड़के ने अपने आप से ये वादा किया, Someday एक दिन I will get back for my father everything that they took away. मैं अपने पिताजी के लिए वो सब जीतूंगा जो उन्होंने खो दिया है. And we will never be poor again. और हम फिर कभी गरीब नहीं होंगे. That 13-year-old boy is in this stadium tonight. वो 13 साल का लड़का आज यहाँ पर मौजूद है. Stand up, Sushil. सुशील, प्लीज Stand up. खड़े हो जाइए. Yeah, it started today. What time today? Today morning, the entire day it goes. It's in South Africa today. Amit. Here, take this. What's wrong with that? Yes, I want some. Drink up. And his father और उनके पिताजी is at home watching cricket आज वो घर पर बैठ के आराम से क्रिकेट देख सकते हैं. in a beautiful home एक बहुत खूबसूरत घर पर, that doesn't leak. जहां पर बारिश की बूंदें नहीं गिरती. Now let me ask you a question. तो मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए, Which is worse? क्या बुरा है To live in Hungary in the 1950s, 1950 में हंगरी में रहना, face down in the mud, जहां पर आपके सर को मिट्टी में घुसाया हुआ हो, with a boot on your neck, और आपके गर्दन पर एक कोई आदमी खड़ा है अपना जूता रख के, unable to get up and to do something with your life? आप उठ नहीं सकते और अपनी जिंदगी से कुछ नहीं कर सकते? Or to live in India at the turn of the millennium, या हिंदुस्तान में इस क्षण में जीना, face down in the mud? सर आपका मट्टी में हो, Nobody's boot is on your neck. आपका सर मट्टी में है लेकिन किसी का जूता आपकी गर्दन पे नहीं है. No law keeps you down. कोई लॉ आपको नीचे नहीं रख सकता, But there you are, लेकिन वहीं पर हैं आप, face down in the mud, आपका मुंह मट्टी के अंदर है, free, आजाद, with economic opportunity all around you. आपके पास एक आर्थिक मौका है यहाँ पर चारों तरफ, Face down in the mud. लेकिन आपका मुंह मिट्टी के नीचे है. Which is worse? क्या बुरा है? What is the difference? क्या ज्यादा बुरा है? फर्क क्या है? Get up, उठिए, get up, उठिए, get up. उठिए, Utie, उठिए, get up. उठिए. Do something with your life. कुछ करिए अपनी जिंदगी के साथ, Do something with the opportunity you've been given. कुछ करिए इस मौके के साथ जो आपको दिया गया है. Gandhi spoke about the brevity of life and how quick it is.
गांधी ने कहा जिंदगी के बारे में, Gandhi spoke about how soon it's over. गांधी ने कहा जिंदगी कितनी जल्दी खत्म हो सकती है। The Quran speaks about the brevity of life and the fragility of life. कुरान कहती है कि जिंदगी कितनी छोटी और जल्द गुजर सकती है। There's a poet in the Bible that says life is like cut grass blowing across a field. एक कवि है बाइबल में जिसने कहा कि जिंदगी एक घास के टुकड़े के जैसे है जो हवा के साथ उड़ जाता है। You can smell its fragrance. आप उसे सूंघ सकते हैं, You can see it blow in the wind, आप उस घास के टुकड़े को उड़ते हुए देख सकते हैं, and then it's gone. और फिर वो गुजर गई। The American poet Longfellow describes life like this. अमेरिका के पोएट लॉन्गफेलो ने इस तरीके से दिखाया, Life is like two ships crisscrossing the ocean in the middle of the night. जिंदगी दो कश्तियों की तरह है जो आमने सामने गुजर जाती है रात के अंधेरे में। Someone lifts up a lantern. कोई लालटेन दिखाता है, You hear a bell ring. एक छोटी सी घंटी सुनाई देती है, You hear the flap of a sail. आप उसके सेल को उड़ते हुए सुन सकते हैं हवा से। You see some polished wood and some brass. थोड़ी सी लकड़ी दिखाई देती है, थोड़ा सा ब्रास दिखाई देता है, And you see a few faces. और कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, And then you're plunged into darkness. और फिर अंधेरे में दोनों कश्तियां अपनी अपनी तरफ चले जाती हैं। It doesn't last long. वो हमेशा के लिए नहीं रहता। There is no time for regret. कोई वक्त नहीं है पश्चाताप के लिए, There is no time to fight your neighbors and your relatives. लड़ने के लिए कोई समय नहीं है अपने पड़ोसी के साथ, अपने There is- रिश्तेदारों के साथ। There is no time to be angry and worry about things that have already happened. कोई समय नहीं है गुस्सा होने के लिए उन बातों का जो गुजर चुकी हैं। There is just enough time to reach out and grab the moment that God has given you. सिर्फ इतना वक्त है कि आप अपना हाथ फैला के उस मौके को पकड़ें, उस क्षण में जो भगवान ने आपको दिया है। It's over quick. बहुत जल्दी वो क्षण चले जाएगा। Do something. कुछ करिए। Napoleon said this. पोएट ने ये कहा, Ability means nothing. Ability. एबिलिटी, काबिलियत से कुछ नहीं होता, काबिलियत से Unless there's opportunity. काबिलियत से कुछ नहीं होगा जब तक एक मौका For नहीं होता। thousands of years of the history of India, हजारों सालों में इतिहास हिंदुस्तान के there was not opportunity. एक मौका नहीं था। There was ability. काबिलियत थी। Some of the world's greatest people have come from India. वो हिंदुस्तान के जो दुनिया के विश्व में बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान से आए हैं, But for a nation, लेकिन एक देश के लिए, for us, the ordinary people of a nation, हमारे लिए जो एक आम जनता है इस देश की, Napoleon was right. नेपोलियन सही था। Ability means nothing काबिलियत से कुछ नहीं होता unless there is an opportunity. तब तक वहां पर एक मौका नहीं हो। For thousands of years of history, हजारों साल के इतिहास के लिए the Indian people have not had that opportunity. हिंदुस्तान के लोगों को वो मौका नहीं दिया गया। Your great-great-great-grandfathers did not have that moment. आपके दादा परदादा और आपकी पुश्तों के पास वो कभी मौका नहीं था। You didn't ask for it. आपको ये दिया गया है, Your grandparents didn't have it. आपके दादा के पास ये नहीं था, But you've got it. लेकिन आपके पास आज मौका है। It's been given from God to you. ये मौका भगवान ने आपको दिया है। I give you opportunity. मैं आपको मौका दे रहा हूं। Here अवसर it दे- is. ये अवसर है आपके पास। Now it is up to you. अब बात आपके ऊपर है। You must make a decision. आपको निर्णय करना पड़ेगा। Take it. ले लीजिए इस मौके को, Take it. ले लीजिए, Take it. ले लीजिए। Do something with कुछ your life. करिए अपनी जिंदगी के साथ।